On the occasion of this program, being the head of the institution, this is my duty to welcome today's chief guest, a very eminent personality who has vast experience across the world, starting from Norway, from basic high school to very higher level, and presently he is working with the UN environmental programs, and Mr. Erik Solhiem and his son is also here, who I was discussing that just he has been graduated this time, and in future he is again going with master's program, probably in international relations. I would like to welcome both the guests along with Sri Vishnu Lamba ji, whose contribution in environment protection everybody knows in the country. So I also welcome and all other guests who are available here, who are sitting here. So about the chief guest, I feel great privilege by introducing a great personality of world's leader, diplomat, and a politician, and a great environment lover, or we can say environmentalist, a protector, Mr. Erik Solhiem, as already introduced by me, that what has been his contribution. He attended high school at Oslo, and student must know Oslo is the capital of Norway. Okay? Yes. And you must know same time, because it is all in daily life or while you are studying, you must know some geography also. What is the location of the country, and what is the day length in different seasons, and what is the temperature in Oslo, and how they are working under harsh conditions. We must know. These all students must know. Okay. So again, he attended the high school at the capital of Norway in a very renowned school, and then after high school he joined the Air Force of the country. See the beauty. Usually we can see in Israel, we can see in some other countries also, that after acquiring the basic high school or other qualifications, I think, I don't know, but mandatorily everybody has to join, or voluntarily. At that time it was mandatory. Mandatory. Now it's voluntary. Okay. But in Israel, you see, it is all mandatory. So he joined the defense services in Air Force, graduated from the University of Oslo in 1980. Then he also served as the Honorable Minister of the Environment of the nation from 2007 to 2012, full 5-year term. And as Minister of International Development from 2005 to 2012, and then he served Executive Director of the UN Environmental Program. After China and US, we are number 3. So again, welcome to
this campus of Rari Dugapra and in this program. Thank you very much for your time. Request all the dignitaries to release Green Bachpan campaign. Now I request our special guest, Vishnu Lamba ji, Chairman of India, sir. Personally, College of Horticulture is indebted to you for bringing such an eminent profile here and also giving us the dream opportunity to interact with sir. Thanks. सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनीवृंद, कभी कभी ठाकुर जैसी कृपा कर देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने बचपन में ऐसे नाम सुने थे, आतंकवादी संगठन लिखे, पाकिस्तान की वॉर, चाइना की नौटंकी, कई सारे अबू धाबी, कंधार, ये सब चीजें हमारे आसपास से गुजरी, आप सब लोगों को पता है किसी न किसी रूप में। उन तमाम बीमारियों के सॉल्यूशन के लिए वो जितनी भी चीजें थी, उनका इलाज क्या था, कौन लोग कर रहे थे, मैं नहीं बताता। ऐसे वैश्विक शांति स्थापित करने वाले लोगों में जिन लोगों की प्रमुख भूमिका रही, भारत के वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो लोग भी जमीनी स्तर का काम कर रहे हैं, उनके मनोबल बढ़ाने की बात रही। मेरे जैसे सामान्य बागवान एक गांव के लड़के को मेरे गांव में, छोटा सा गांव टाउन में लिया है, वो भी इन तक कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, वो ठाकुर जी करुणा ही थी। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में जहां चंद नाम होंगे विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, धरती की हरियाली के लिए, धरती खुशहाली के लिए, जिन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी, प्रेरणादायी भूमिका निभाई होगी, उन लोगों में जिन लोगों का सर्वश्रेष्ठ नाम आता है, उसमें आदरणीय एरिक सोलिम हमारे बीच विराजमान। एरिक सोलिम के साथ मेरा रिलेशनशिप, जिस तरह की कनेक्शन कनेक्टिविटी है, वो मैं ठाकुर जी कृपा ही समझता हूँ। पहली बार जब मुझे ट्विटर पर, मैं फेसबुक नहीं चला पा रहा आजकल, टाइम नहीं दे पा रहा, मजदूरी के काम बढ़ गए, थोड़े विदेशों में जाना पड़ता है इधर उधर, तो वो इनबॉक्स में मैसेज आया किसी का, तो मैं बोला कोई अंग्रेज है यार, मैंने किसी को एक फर्जी आईडी तो दी, देख लो मैं जानता नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिया। तो मेरे को कहा किसी ने, पागल आदमी, बहुत बड़ा आदमी है, मोदी के कंधे पे आदमी घूम रहा है, प्रधानमंत्री कर ले, मैंने वीडियो दिखा, तो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो दिखाया मुझे, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री पे और वो मोदी पे, दूसरी पे घुमाने अलग बात है। तब मुझे लगा कोई है दमदार आदमी। फिर मैंने इनको हिम्मत करके अंग्रेजी में, एक हिंदी में लाइन लिखी है, हमारे पड़ोसी छोटे बोला, मैं यार इसको अंग्रेजी बना के दे मुझे, तो उसको इनबॉक्स में डाला मैंने, तब इनसे नंबर मांगे, फिर हमारा इसने कहा कि पर्सनल बैठना मेरे तक, और इस तरह से मैं आगे करना है कुछ। भारत में जहां भी जा रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही है, श्री कल्पतरु संस्थान लगभग 150 अभियान चला रहा है दुनिया के 13 देशों में, भारत के 22 राज्यों में। उन अभियानों में ज्यादातर किसी का अगर योगदान है, ज्यादातर किसी की प्रेरणा है, तो आदरणीय एरिक सोलिम साहब की है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, मुझे सडनली प्रोग्राम का पता चला कि एरिक प्रधानमंत्री जी के साथ जयपुर आ रहे, और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप चंद 10 मिनट का समय हमारे रुक जाइए, निकाल दीजिए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ ये समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू यू ऑनरेबल एरिक सोलिम। और एक विशेष बात ये हुई कि दुनिया में जिन यूथ लीडर्स की बात करते हैं एरिक सोलिम, युवाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित करते हैं, युवाओं को लीडरशिप के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। मैं हमेशा देखता रहा कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगा उन्होंने एक्सेल को तैयार किया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो लीडरशिप करेंगे। इतने दोनों बाप बेटे से मस्ती अपनी तरह नहीं रहते कि हमारे दादाजी रहते रोटी मुर्गी, हमारे पिताजी, मतलब मेरे फादर घर में आ जाए तो मैं भगवान की खा के बोल रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती घर में जाने की। मेरी माता राम को बोलता हूँ बाबू जी रोटी खाने, बोले तू बाहर से बाहर जाए। और मैं जब तक अभी भी मैं सालों में जाता हूँ तो घर छूट गया मेरा,
तो सॉरी, राजस्थानी हमारी घर में मुझे राजस्थानी भाषा में निकल जाती है बीच में। इन्हीं की कृपा से मुझे कई लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हम दुनिया के 13 देशों में काम कर रहे हैं। मुझे लैंग्वेज इशू रहता है, लेकिन फिर भी हमारी फीलिंग्स जो है वो बहुत ठाकुर जी कृपा है, वो समझ जाता है मेरी कहानी, मैं समझ जाता हूँ। तो आप सब लोगों से कुछ बातें हैं। आप लोग जो है इनोवेशन कर रहे हो, वो अपने आप में अद्भुत है, लोगों को पता नहीं है। गांव का मायने कोई लावणी करवा जाते लोग यहाँ, तो पाल को तोड़ जाती, कोई 5 तोड़ जाती, मैं भी कौन छोड़ू ताकि 2 पाले जो तो मेरा निवेदन ये थी, आपने हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी रखा है ना कार्यक्रम, तो ये हॉर्टिकल्चर ही तो है। और सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊ विकास। एक बार ऐसा काम सीख जाओ, ऐसा काम करो जो चलता ही रहे। अब सस्टेनेबिलिटी तो हमारे पहले भी थी। हमारी दादी हमारे उतरे हुए कपड़ों की तकिया खोल बना दी थी, गुदरी सी दी थी, सस्टेनेबिलिटी तो वही थी। अब हम लोग अगर कुछ कर नहीं पाए दुनिया में, भारत अगर कुछ कर नहीं पाया, तो ये नहीं कर पाया कि दुनिया के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। सो कॉल्ड एजुकेटेड दुनिया के देखता हूँ मैं, अंग्रेजी में भाषा करने वाले, कोट टाइप पहन करके बड़े बड़े मंचों से जाने वाले, वो चंद लोगों की बातें हो सकती है, उनका अपना महत्व हो सकता है। लेकिन आप लोग जो यहाँ काम कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, मैंने परिवादी से उस दिन पूछा, एक क्यारियां किसने तैयार करी? बोले बच्चों ने। मैंने कहा ये पौधे किसने लगाए? बच्चों ने। मैंने कहा इधर एक पेड़, बाकी नाम प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय परिवार का, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उन्होंने सब बच्चों से एक पेड़ लगवाए, और जिसका सूख गया, उसको वापस लगवाने की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। ये अद्भुत काम मुझे लगा। मैं राजस्थान में, भारत में, बाहर की कंट्री में कई जगह मजदूरी करने जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, सीखने के लिए विद्यार्थी भी भेज जाता हूँ। आज आपके पास भी कुछ सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा जहाँ बच्चों से उनके नाम पे पेड़ लगा के उसको जिम्मेदारी दी जा रही है और सूखने पर वापस लगवाया जाता है। 4 साल की मेंटेनेंस वही करता है। मैं बलराज साहब का नाम सुना था, मैं जानता नहीं था। पिछली बार कार्यक्रम के माध्यम से मुझे यहाँ निमंत्रण देने का मौका मिला, और उसके बाद हमारी मुलाकात आज हो रही है। मैंने बीच में विक्रम जी से पूछा, मेरे एडवाइजर है भाई बड़े, तो मैंने विक्रम जी को कहा, मैंने कहा बलराज साहब का मैंने कई सारे नाम सुना है तो कोई तगड़ी पर्सनैलिटी। तो वो बोले कि यार ये जॉबलेर वाले। मैंने कहा बोले मैं साहब को जानता हूँ अच्छी तरह। मैं कहता मुझे जना दो। तो 3-4 लिंक भेजे मुझे। इनके जो भाषण मैंने सुने हैं, ये दावे से कह सकता हूँ, वो जो गाँव की कई खेत कच्ची झोंपड़ी से निकल के कोई आदमी आता है ना, जिसको सब कुछ पता है, जिसको रूखी सूखी रोटी का पता है, जिसको छान का पता है, जिसको तिरकाल का पता है, जिसको व्हाइट हाउस का पता है, वो बलराज। मैं आप लोगों को इस बात के लिए, पौधारोपण के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए और इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर जब मुझे पता चला, तो मैंने पिछली बार परिवाजी ने कहा था ये बच्चे आपके हैं, डीन साहब ने, भैरवा साहब ने कहा ये सब सारे कार्यकर्ता आपके सब साथी हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम सेवा कर सकें हमारे कार्य के अलावा भी, तो जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ऋषि साहब का ऐसा कहना है कि जितना कोई लाभान्वित हो सके हमारी सेवाओं से, उतना होना चाहिए। तो जैसे ही अवसर सामने आया, मैंने भैरव साहब से निवेदन किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा एक है, एक पौधा आप लगा सकते हैं। भगवान को मुझे पता नहीं था कि आप इतना जबरदस्त आयोजन करोगे। इतना जबरदस्त फूल, मेरे तो जेब में इतने पैसे होंगे नहीं था, कितने का आता होगा, 400-500 आता होगा, मेरे पास वो भी नहीं है। अब 2 बातें महत्वपूर्ण आपसे करनी है। पिछले 30 वर्षों में विदाउट गवर्नमेंट ग्रांट 1,60,000 पौधे लगा के संरक्षित करने का काम श्री कल्पतरु संस्थान ने किया पिछले 30 सालों में। और अब ये यात्रा ने थोड़ा रूप बढ़ाया है, बदला है, परिवर्तन आया है, क्योंकि यूथ की टीमें तैयार हो गई इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से। हम लोग अभी इंटर्नशिप करवा रहे हैं, तो जो भी इंटर्नशिप करना चाहता हो या एज ए वॉलंटियर इस काम में जुड़ना चाहता हो, तो वो व्यक्ति कल्पतरु संस्थान के कॉन्टेक्ट में रह सकता है। वो विश्वविद्यालय स्तर पर करना चाहता है, महाविद्यालय स्तर पर करना चाहता है, तो विद्यालय परिवार के माध्यम से वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। आप लोग जो इनोवेशन कर रहे हो, नागौर की एक नम्रता जी मिली, वो बोले भाई साहब मैं ऐसा कुछ करती हूँ। मैंने कहा बताइए। वो जो
टीवी पर डिबेट चलती थी रोज ही सरसों की काट की, क्या बोलते उसको, पराली पे नाटक चल रहा था। आप ताजुब देखो, उसने कुछ चीजें मिला करके इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए। मैंने एरिक साहब को बताया, एरिक साहब ने यूनाइटेड नेशंस को भेजा, वहां से ट्वीट हुआ, ट्वीट होने के बाद में उस लड़की को वैश्विक स्तर पर भी जाने का मौका मिला है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यहाँ जो भी इनोवेशन कर रहा हो, करना चाहता हो, कुछ यूनिक करना चाहता हो, मैं आप लोगों को एक वादा करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। मुझे नहीं पता यहाँ सरकारी आयोजन किस तरह के होते हैं, क्या उनके परिणाम होते हैं, मैं तो फकीर आदमी हूं, लेकिन एक वादा करके जा रहा हूं, अगर आप में क्षमता है कुछ करने की, विश्व मंच प्रदान करने की गारंटी कल्पतरु संस्थान क्योंकि लिख के रख लीजिए। आप दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी यूएन से बैठा तो क्या होगा, दुनिया में सबसे बड़ी संगठन दुनिया का, आपका काम वहां तक भी ले जाना पड़ा। आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, वो तो चलता रहेगा, उसका तो मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूं, लेकिन आप अपने जो भी कुछ कर रहे हो, और हमारे मस्ती को अपेक्षा है आपकी, हम चाहते हैं कि वो काम हमें बताएं ताकि हम लोगों को पहुंचाएं और भी आपसे लाभान्वित हो। इंटर्नशिप के बाद अभी आदरणीय बलराज साहब के नेतृत्व में एरिक साहब ने, एक्सेल ने, डॉक्टर हमारे बैरवा साहब ने, और मुझे भी इनके साथ खड़ा होने का मौका मिला है, ग्रीन बचपन अभियान का आपने लॉन्च किया है। श्री कल्पतरु संस्थान जितने अभियान चला रहा है, उन अभियानों में भी हम लोगों ने 30 तारीख को, जिसमें आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, सहभागी थे, सहयोगी थे, और मैं बधाई देना चाहता हूं, एरिक यहाँ मौजूद है, उद्यानिकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने का माननीय राज्यपाल राजस्थान सरकार ने, महाराष्ट्र के यशस्वी वन मंत्री जी ने, तेलंगाना के सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले देश के सांसद संतोष कुमार जी ने, केंद्र के कई सारे मंत्रियों ने, सबके याद नहीं रही मुझे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ग्रीन आइडल अवार्ड देकर के जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे देश का, उसमें मात्र एक महाविद्यालय को चुना गया, वो आपका महाविद्यालय था, क्योंकि यहाँ उसका ग्राउंड लेवल का काम हमारी टीम ने, हमने सबने देख रखा था। एक बहुत बड़ी बात और बता देता हूँ, मेरे लिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं बलराज साहब से या यूनिवर्सिटी से, किसी से भी, ठाकुर जी के मेरे बीच का संबंध रहता है जीवन में हमेशा, एकदम अलग टाइप का आदमी, लेकिन जो सच है वो दुनिया के सामने जाना चाहिए। मैं जब यहाँ पर आया, परिवार जी को मैंने कहा विशी साहब से, यार मैं सीधा बात नहीं करना चाह रहा, बड़े आदमी है, मैं किसी से कहलवाऊंगा, तो मैं सोचा, मैंने गुप्ता जी को फोन किया, शाम किरण लाल जी को, मैंने कहा किरण लाल जी बोलता हूँ, मेरा ठीक है थोड़ा मुँह लगाओ, मैंने कुछ लोगों तो मैंने कहा उनको बोलता हूँ, कहते हैं देखो सेकंड राज्यपाल की दर्जा होता है विशी का, बहुत बड़ी बात होती है, तो उनका बड़प्पन हमारे बीच बैठे। तो मैंने उस समय परिवाजी को कहा, तो परिवाजी ने बोला अचानक जैसे ही सहयोग करने लगे, अच्छा ठीक है मिलते हैं, अपन करेंगे, अच्छा करेंगे, जाने लगा, तुरंत बोले विशा आ गए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ, तो बोले मैं देखता हूँ कहाँ पर है, मैंने कहा मैं सामने 2 मिनट लगेंगे, मुझे इन्विटेशन देना है उनको। तो बोले वो जस्ट क्लास में चले गए, मैंने क्लास में विषय का क्या काम, बोले क्लास लेते हैं, खुद लेते हैं। विक्रम जी भाई साहब, मैं यहाँ पर 2 घंटे बैठा रहा, मेरे जीवन के इतिहास का पहला उदाहरण था, किसी विषय ने 2 घंटे तक क्लास बच्चों को पढ़ाया। मैं राजस्थान के महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, प्रोफेसरों से, शिक्षाविदों से, शिक्षा जगत के लोगों से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, बलराज साहब से प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा लीजिए। आने वाली भारत की आने वाली उज्जवल पीढ़ी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है, आज के युग के चाणक्यों की आवश्यकता है, जिनसे अशोक का निर्माण हुआ, चाणक्य के द्वारा, ऐसे चाणक्य के आपको जिसकी आवश्यकता है, वो बलराज साहब के रूप में हमारे बीच में है। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एरिक साहब को कहीं जाना है, मुझे भी इनके साथ आज मजदूरी करना है, ये नाश्ता कम करते हैं, इनकी प्लेट में चिप जाता हूँ, आप समझो भावनाओं को, अपना काम वही है। आज हम लोगों ने जो ग्रीन बचपन अभियान का शुभारंभ किया है, ग्रीन बचपन अभियान में 5 से 12 साल के बच्चों का कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में शुरू होगा। आपको बता दूं, यूट्यूब पे देखना आप श्री कल्पतरु संस्थान वाला जाके, कई कंट्री के बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं, और मेरा मानना है कि 197 देशों के युवा बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे अगले साल तक। इसके लिए हम योजना बना रहे हैं, आज एरिक साहब के साथ बैठने वाले हैं, कुछ लोग और भी
समाज के सरकार के आएंगे, उनके बाद में ये इनको शी ऑफ करेंगे हम। आप बच्चों को संस्कार देने का काम कर सकते हैं कि जन्मदिन पे आते पता नहीं क्या हो गया, पागलपन सा हो रहा है, वो खाने का केक मुंह पे चौपड़ लेते हैं और इसे लपेट करके सड़क के बीच में जाकर के क्या हो रहा है पागल आदमी। मतलब इंसान के बच्चे हो, आत्मिक तरह करो ना, पेट में खाओ। तो ये सब चीजें मेरा निवेदन था। आज एक काउ कटलिंग हमने नया कार्यक्रम शुरू किया। नया माने ये कार्यक्रम अपना था, 5000 साल पहले अपना था। काउ कटलिंग भारत से गाय का क्या संबंध है को बताने की जरूरत है कि हमारे डीएनए में गाय है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। फादर्स डे हम तो रोज फादर्स डे मनाते हैं, कांपते हैं कि टूट ना जाए, रोज मदर्स डे मनाते हैं। और कौन कौन से डे, जो भी डे होते हैं, एक प्रेम का भी डे हो रहा है, राखी, वो राखी नहीं कुछ बोलते हैं उसको, वो बांधते हैं आजकल, वो भी शुरू हो गया। तो वो भगवान कृष्ण का, सुदामा का, शबरी का, ऐसे उदाहरण, निषाद का, ऐसे उदाहरण हम देखते हैं तो हम सोचते हैं यार बहुत असली मित्रता दिवस। तो अभी आजकल तो क्या मतलब है, गुलाब नंगे कर देते हो पार्क में बैठ। तो आगे की जो कहानी है वो ये है, काउ कटलिंग आज हमने शुरू किया है। जो विदेशी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अलग अलग दुनिया में रहते हैं, उस पाश्चात्य कल्चर के लोगों को पता चले कि भारत की संस्कृति में गाय का क्या महत्व है, उससे क्या उपचार होते हैं, वो किस तरह से मानवता के लिए लाभान्वित हमारे करा सकती है, उसके लिए हमने आज एक शुरू किया है। मैं एरिक साहब का उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों को अधिक समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा को जारी रखिए, चलाते रहिए। नौकरियां जाने कितने लोग आए, कितने करते रहते हैं, एक दिन आप रिटायर हो जाएंगे नौकरी करने वाले, जो नई पौध आ रही है वो बड़ी हो जाएगी, फिर वो रिटायर हो जाएगी, सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। कोई दुनिया में स्थायी रूप से यहाँ जमने रहने नहीं आया है। हमें थोड़ा जल्दी समझ में आ गया बचपन में, क्योंकि पूज्य संतों के चरणों की धूल बन के उनके साथ चलते रहने का काम मुझे ठाकुर जी ने दिया। 7 साल की उम्र में घर छोड़ गए, आज 35 प्लस हो गए, लेकिन अब ठीक है, दौड़ रहे हैं। पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं, बहुत दूर, अब अंधेरा दिखाई देता है पीछे, अब नहीं जाएंगे। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, पूरे विश्व में बड़े बड़े जो घटनाओं से हमने देखा, रूस यूक्रेन के युद्ध हुए, भारत के बेटे बेटी जहां भी जिस रूप में थे, उसी रूप में उन लोगों ने जो भी उनसे संभव हो सका मानवता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रूस यूक्रेन के युद्ध में शांति बहाली में सर्वश्रेष्ठ रूप से जिन नेताओं का नाम था, उसमें ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सेकंड नाम था उसमें आदरणीय एरिक सोलिम का। कई सारे ऐसे देशों की दुनिया में जो चीजें चल रही है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनको देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं दीक्षा में आपका नहीं लूंगा। श्री कल्पतरु राजस्थान लगातार छोटे मोटे प्रयास करता रहता है, आप उस प्रयास का हिस्सा बनेंगे ऐसी मुझे अपेक्षा है। और भविष्य की योजनाओं से के माध्यम से जुड़ करके हम कुछ बड़ा काम करेंगे। मैं एरिक साहब का एक बार विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, मैं एक्सेल का आभार व्यक्त करता हूँ, और एक्सेल से उम्मीद करता हूँ कि आने वाली मानवता के लिए एक यूथ लीडर के रूप में आप उभर कर पूरी दुनिया का नेतृत्व करें। हम सब आपके साथ हैं। हम लोग जल्दी नॉर्वे जाने वाले हैं, और नॉर्वे के आसपास की 10-12 जो कंट्री है उसमें मजदूरी करने वाले हैं, तो उस मजदूरी में आप भी सहभागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे This is indeed some magic of Almighty that today we have two greatest leaders under one roof. One is an academician, other is an environmentalist. So thank you very much, Vishnu sir, for such a passionate presentation. So now we have another young leader with us, our special guest, Erik Solhiem. I just had a word with him. He is keen to say or address the gathering. So I welcome you here. Thank you so much. Honorable Mr. Vishnu Lamba, esteemed professors and staff, students, good morning. My name is Axel. I am Erik's son, and I'm so thankful for having the opportunity to come here and learn about the great work that everybody here is doing. The land unites us together, regardless of age, gender, or where you come from. The importance of green land, of planting trees, of horticulture unites us all together. And it's so inspiring to see that here in Rajasthan, this is also so important. It's very easy to think about these things as local issues, protecting trees, tree planting as being local. But I completely disagree.
This is 100% a global issue. A tree planted in Rajasthan will help a fisherman in Norway, it will help a farmer in Brazil, and it will help create a greener planet. I will thank you so much for having the ability to come here today, and I wish all the students, the staff, and everybody who's here today great luck in these projects and a good forward day. Thank you so much. Thank you, Axel, for a very encouraging and motivating talk. So now I request our guest of honor, Mr. Erik Solhiem, sir, to address the gathering with his enlightening words. Please, a big round of applause. So, a very good morning, Jaipur. Namaskar. What a wonderful morning. Weather is perfect, not too cold, not too hot, absolutely perfect. Coming to this very green campus, which is so nice, watching the rooftop garden, being introduced to the university by the Vice Chancellor and listening to all the great things you are doing. Planting a tree, and of course, most important of all, meeting the great students of this wonderful university. I also take notice of the fact that there are so many girl students here, because this is a business which historically was so dominated by boys or men, so it's a wonderful. And I have a word of warning to my fellow boys. Be careful, because the girls are smarter than us. They are working harder than us, so we need to really shape up if you want to compete with all the girls. Then Rajasthan, of course, is a fantastic state. I mean, the Vice Chancellor spoke about how and the very harsh conditions, very dry state, lot of desert. Rajasthan has been so central to Indian culture. The Rajputs came from here, and this has been very central to the cattle farming in India and in so many other ways. So Rajasthan is one of the most important states of India, and I'm so happy to be here. And you students now are, I believe, the most lucky generation in modern Indian history. Look, 300 years ago, India was 25% of the global economy. Then, because of colonialism, it fell and fell and fell and fell, until at independence, India was only 2% of the global economy. India was 15 to 20% of the global population, but only 2% of the economy. And at the time of independence, nearly all Indians were absolutely dirt poor. The life expectancy in India at the time was maybe below 30. So at birth you could expect to be 30. Half of all Indians at the time died before becoming adults, and very few Indians could read and write. So never ever let any Brits or anyone else tell you that colonialism was a fantastic and good time for India. It was an absolute disaster. But after that, India started climbing, and now India has the highest growth of any big economy in the world. And India will become one of the most important nations in the world in this century. Yes, China will be important for sure. United States will be important for sure. But India will be the third most important power. But we have, of course, Europe, Indonesia, Russia, Brazil, South Africa, Turkey, many other powers. But India will be one of the absolute most important leaders of the world in this century. And you will be lucky to be part of that, and you will shape it through your hard and good work. I think you're all aware that the planet Earth is facing three major environment problems. Pollution. You have seen reports recently about the horrible pollution in Delhi.
We just came back from the state of UP. Very sorry to say there is very bad pollution. It's much better in Rajasthan and Jaipur, but in UP you have a really bad pollution and it's affecting people's health, and we need to solve that problem. Second is climate change. Rajasthan is a very dry state with somewhat difficult rainfalls, and climate change may make it even drier, and it's a very hot state in parts of the year, and temperature will increase even more. So climate change is the second environmental problem. And the third is the destruction of ecosystems, where we are wiping out different animals and destroying forests and ecosystems. But I'm not come here to talk about the problems, because much more important than describing the problems is the solutions. What can we do to fix these problems? Because the lucky thing is, for all these problems, we have the solutions. All the technologies, all the finances, all the policies we need to fix the problems are all available. And under the leadership of Prime Minister Modi, India is playing a key role globally in fixing these problems. But let me speak about them and also try to look into how agriculture and your work can be part of the solutions. First, energy. Vice Chancellor hinted to that, but in the past, everywhere in the world, if you wanted to grow the economy and become rich, coal was the energy. It was not picked by anyone because they believed it was good for the health. Not because anyone believed it was good for nature. Coal was the solution everywhere because it was the cheapest energy. You wanted to get everyone out of poverty, well, you needed to embrace coal. Europeans did it first, the United Kingdom first, then the Americans, then the Japanese, then the Chinese, then the Indians. Everyone embraced coal because it was the cheapest, the only way out of poverty. That was so much a thing of the past. Now everywhere in the world, solar is the cheapest energy. 10 years ago, if you made the switch from coal to solar, it was very costly. And a nation like India, with limited resources and a lot of still poor people, could not afford to move from coal to solar when it cost a lot of money. But now it's the vice versa. You save money if you make the switch from coal to solar. Added, of course, the sun is Indian. Oil and gas is not Indian. India has hardly any oil. So when India wants oil, well, it imported from Saudi Arabia, from Russia, from our nation Norway, from someone else, and it sends money to these nations to buy the oil. If you can tap into the sun, no one will charge you. Sun is here, right here in Rajasthan, and you save money which can be better used for education or health or other purposes. So we are in the point of human history where we are making the switch from a coal-based economy and an oil-based economy into a solar-based economy. I will speak mainly about India, but let us also face the fact that China is now by far the world leader in making this transaction. Two-thirds of all new solar and wind projects in the world last year, 60% of all green, solar, wind, hydropower, electric cars, electric batteries, high-speed rail, metros, whatever you can mention, are in China. 60% of everything in the world. But India will very soon be the second nation in this solar economy. In a few years' time, India will be passing the United States and then be next to China, the most important solar economy. Prime Minister Modi has set a target of 500 gigawatt of renewable energy in India by 2030, but most people don't really understand what a gigawatt is. When that is reached, it will be 1 China, 2 India, 3 probably the United States, and then we'll have the other nations. So take pride in this major shift. Then how can this
be embraced by a community which is focusing on agriculture. Look, the big problem for solar is land. Because if you put solar panels on the roofs, it's wonderful. Put it on the parking lots, wonderful. But if you want to replace fossil fuels, you need a lot of land. The state of Rajasthan have quite a lot of land because the population is relatively limited compared to the land. But in say state of UP, there is no available land. We just came from eastern UP, I didn't see any available land. Everything is agriculture, and you cannot kick out the farmer and put up solar panels and say thank you, we will take your farm and put up the solar panels. So what are the solutions? One solution is of course using desert areas like Rajasthan. Gautam Adani Group is now constructing the biggest solar plant in the world. It's in the state of Gujarat, and it's a desert of Gujarat. Not only is it a desert, it's a salty desert. So there's absolutely nothing there, no one living there. There are not even ants there, because nothing can live in salt. So that is brilliant. But the other solution is what's called photovoltaic agriculture, meaning setting up the solar panels in the fields of the farmers, combining agriculture with solar. Under the solar panels, a lot of plants can thrive. Many of them can even do better because they get shade from the solar panels. And in the solar panels you can raise chicken, or you can have sheep, or there are many practical solutions. So that is the number one challenge to you. Be part of this agrovoltaic revolution, where we make combination of agriculture and solar panels. Then the farming family get two incomes. Well, you sell the tomatoes or the rice or whatever is produced on your farm, but you also get income from the solar panel, which is set up right there at your farm. Another area where energy and agriculture should be combined more in India is of course to use the residues for agriculture as a source of biofuels. Look, there are many reasons for the pollution in UP and Delhi, but one of the major reasons is that farmers are burning the residues. They are burning the farm or the straws. Why? Because they want to put up new plants as fast as possible, and that's the most practical solution. But if you can create an economy where these residues are picked from the farmer, brought to factories, and then transformed to biofuels, of course that's good for the farmer, create more employment, create wonderful green fuels, and it's good for the health because it reduces pollution. And this is possible. It's already happening in Haryana, it's happening in UP, happening in Punjab, but we need to scale this to do it more, and that's one of the most important solutions to the horrible pollution problem, simply to see the waste as value. This is not just waste. This is a lot of straws which can be turned into energy for cars. Okay, so the energy revolution, India is now moving to the front seat. Solar and biofuels are two of the biggest opportunities, and those can very much be combined with agriculture. Second area is transport. We need to move to electric cars. This will happen. It will happen very fast. People don't understand how fast this will happen. In my nation, Norway, 95% of all new cars are electric. And I have never ever met a person who had a gasoline car, switched to an electric car, who said, oh, I want to go back to the gasoline car. Why? Because not only is the electric car better, because there's much less noise and much less pollution, but it's also much more high-tech, much more autonomous driving, much better for the air conditioning and heating systems, and simply a much better car.
So that's why people, even if they're not interested in the environment, they just buy it because it's a better car. And in China, which is, of course, much, much bigger than Norway, half of all new cars are now electric. 2 weeks ago, I was jogging in Beijing. It was along a very big road. And then I took out my earplugs because I was listening to some program. And then I realized, wow, there is no noise. It's an enormous road, there is no noise. Why? Because all scooters were electric, all taxis were electric, all buses were electric, many trucks were electric, and half of all the new cars were electric, and electric vehicles don't make noise. And then, of course, there is no pollution. This evolution will come much faster than you think. Delhi already is outside China, the biggest city in the world for electric buses. Ola, which you know very well, has a wonderful factory in Tamil Nadu producing electric scooters, and other companies are making electric scooters in India. So you will see electric scooters, electric three-wheelers, electric buses, electric cars. It will come very, very fast, but of course you need the infrastructure so people can charge it. And in agriculture there is a huge number of vehicles. All these vehicles, even the heavy ones, can make the transition into electricity. So energy, transport. The third area is better nature protection, more tree planting. Wonderful that the students here are planting trees and even cultivating the trees over time, so they learn the importance of these. And some states in India are now doing very well. State of Telangana has increased the tree cover by 7% in the last 2 years. That's wonderful. Hyderabad, which is one of the biggest cities in India, as you know, have 200 urban parks, small parks, forests in the city, which people love to go up for a walk and enjoy. State of Tamil Nadu has set a target of 10% increase in the tree cover of Tamil Nadu. And just to give one more example, Mr. Chauhan, who very recently was the Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, in his 13 years, I think it was, as the Chief Minister, he planted 1 tree every day. That's made for a fantastic little forest in Bhopal, the capital. But of course, also, it inspired many more people in the great state of Madhya Pradesh to plant trees. So, in agriculture, of course, you cannot replace agriculture with forest. But you can do a lot by planting trees in the vicinity, around the plants, around the fields. Very often even trees in the field, it gives some shade and improves the agriculture. And there will be small pockets here and there where trees can be planted. So there are many more ways to combine agriculture with tree planting than people realize. And then of course, again, the farmer can get added income if the tree is, say, fruit-bearing, or if have any other economic benefits. So agroforestry is a very important way of fighting pollution, fighting climate change, and making also India more livable for the animal kingdom. And lastly, we need to recycle. Look, this is my phone. The picture of my son there. But this is my phone. What will I do when this is retired? I will normally just put it into the shelves. I think many of you will do the same. If you have a computer, you don't use it any longer, you just put it somewhere. But this is an enormous waste. Because you won't believe that there is more gold in 1 kilo of electronic waste than there is in 1 kilo from a gold ore from South Africa. And if we can pick this out, recycle it and use it for new products, we create a recycling economy rather than an extractive economy where we all the time need something new. And this is possible. There's a company in India called Aptero. They told me there is nothing in a phone
nothing in a computer, nothing in the air conditioning system, which I cannot recycle. We can recycle everything, just a matter to get the economy right so that this gives meaningful income for people. And go on, 99% of all clothes on this planet are just thrown away. In Bangladesh, they have now started recycling of cotton, which means that when you retire your cotton shirt, it can be recycled into a new fashionable shirt. It's easier if it's white or black, more complicated if there are any number of colors, but in principle, everything can be recycled into new products, and again, then you will not waste so many agricultural resources and water for cotton everywhere. And so there are so many opportunities for recycling. And Indian front-runner here is the city of Indore in Madhya Pradesh. Indore has a nickname, and I'm sure you all know. Indore, the cleanest city in India. Always. And if you go to Indore, it's absolutely amazing because it's absolutely clean. There's not a paper in the streets. How did this happen? Well, they started to sort the garbage at home, set up systems so that people can get rid of the garbage, and all wet waste is turned into biofuels for the city buses. So the double win, no pollution in the city, and clean energy for the buses. And people in Indore are so proud. And when you do this, you change the attitude of people. Look, if all of you are throwing garbage in the street, I will do it also. Because it doesn't matter what I do if everyone else is doing it. If none of you are doing it, I will not be the first to break and do that. In the neighborhood where I'm living in Oslo, there is a very beautiful pond. It's called the duck pond. There are some ducks there. I've never ever seen anyone throwing any garbage into that pond. Why? Because then all the neighbors will come there and tell you, what are you doing? Please stop. So you change the attitude of people, when you get the right systems for recycling, then everyone will follow, because people want to be part of the good. But if everyone else is not caring, it doesn't make sense if I am caring. So these are the four main areas: energy, transport, tree planting and agroforestry, and recycling economy, where we can transform India and the world, and agriculture goes front and center in different ways in all of this, so you can take a lot of pride in what you are doing. Let me just finally say that India has an ancient tradition and history which in my view is more environmentally friendly and focused than basically anywhere else in the world. The old Indians, if you look to the Vedas and all the other great narratives from the old days, are venerating nature. And they have a somewhat different perspective on nature than what is normal in the West. The Indian perspective is, we humans are part of nature. The Western perspective has been, we humans are the owners of nature. They are people who decide everything in nature. And that's somewhat more humble, more realistic perspective, because we are dependent on Mother Earth. Mother Earth don't depend on us. Sorry, very sorry to say, but if all of you and me and everyone, all humans, will perishing tomorrow, Mother Earth will do very well. Mother Earth will continue to grow for many millions, even billions of years after the humans have left it. We depend on Mother Earth. And that's why this Indian old ancient perspective is so important. We humans are part of nature. And the old Indians even did that so thoroughly that they made God half human, half animal. Look, Ganesh, half elephant, half human. Hanuman, half monkey, half human. And can there be any stronger symbol of the unity of man and nature than this? So let that be my final word.
take inspiration from this ancient thinking. 3,000, 2,000 years ago, people went around in India with these very advanced thoughts. Now they're coming to the forefront of global thinking again, because we understand that if we humans want to survive on planet Earth and have a better life on planet Earth, we need to understand we are part of nature, and we need to take better care of Mother Earth, and together we can do that. Thank you so much. Thank you, Mr. Erik. First, I'm really grateful to you for a wonderful note, starting with encouraging our girls, being an activist and feminist. I must share it with you that we have more than 40 girls out of 63 in agriculture. So 40 girls out of 63 are studying agriculture. Seconds are also wonderfully addressed. Environmental concerns like pollution, climate change, and imbalance of ecosystem, with solutions like solar energy, revolution in transportation like electric cars, plantation and recycling. So thank you so much, sir, for such an enlightening words. Now I request our Dean, sir, Professor Ellen Babu. Mr. Erik Solhiem, Honorable Vice Chancellor, Professor Pradhan Singh sir, Mr. Erik Solhiem, and Freeman, Sri Vishnu Lamba. It is my great privilege, it is my pleasure. I'm here to say some few words for the thankful. First and foremost, I would like to express my sincere thanks and gratitude from the core of my heart on the behalf of our University SK Agriculture University of UNEP. From the Rari and from College of Horticulture, I extend my great thanks to Sri Erik Solhiem, former Minister of Climate and Environment of Norway and former Executive Director of the UN Environment Program. He is the dignitary of the world. Along with the dignitary, is the very diplomat, scientist, we can say also politicians, and the great environmentalist. We can say also that is an environment lover. He spare out time in important, very important times for this program, for the valuable time, and inspire our students, our staff, and our institute to, in the form of plantations, more the plants to save the earth. And so, on the behalf of us, we thankful for this very important lecture, very important keynotes on the environment save, how to environment can be saved in the different forms. Thank you very much simultaneously. Erik Solhiem, the son of Dr. Erik, he also spared important time, valuable time to organize this very important program. Apart from that, I extend my very much thanks to our Honorable Vice Chancellor sir to spare the very important time for this organize the program. He also granted permission to organize such kind of the program, and we are all very thankful our Vice Chancellor on the inspiration of him. We are doing such type of the work in our college campus, like the plantation and the drive of the cleanness and the maintain of the, you have seen the important site we are developing, the rooftop gardening is also the part of thinking of our Honorable Vice Chancellor. So very much thankful on the behalf of myself and our institute sir. Very much thanks to Sri Vishnu Lamba sir. He is the great man, tree man of Ranjit. Without involvement of it, the program cannot be possible. Or we are also very much thankful to give the sir important award for the
our research and other dignitaries on the occasion of different occasions. Now, I would also like to thank our faculty member, College of Horticulture. He involved under each and every moment in the great way to make the success of this program. I will also thanks to all the students who are here. As I say, you have to present this and this time. They are ready to present here. And this program cannot be success without presence of our students. Now, special thanks I would like to say that the drive of the plantation work, drive of cleanness, this can be possible only through involvement of you all. So now, finally, thank you all our students, faculty members, other than these, other part of other persons who are involved from the this program. And again, on the behalf of myself, thank you very much to one and all for the deepest thanks. Thank you.